Dear children, today we are going to learn a poem, Puppy and I. So let's start. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met the horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy, said I. Now, let's learn some naming words. First one is puppy. P-U-P-P-Y. Next one is man. M-A-N. Next one is village. V-I-L-L-A-G-E. Next one is horse. H-O-R-S-E. Last one is hill. H-I-L-L. Now, let's learn some rhyming words. Walk. So, the rhyming word of walk is talk. Next one is said. Bread. Today. Hay. Day. Play. Now, we will talk about some action words. First one is walk. W-A-L-K. Next one is talk. T-A-L-K. Next one is go. G-O. Next one is get. G-E-T. Next one is come. C-O-M-E. Next one is roll. R-O-L-L. Next one is play. P-L-A-Y. Now, let's learn some opposite words from the poem. First one is go. So, the opposite word of go is come. Next one is down, up, day, night. Now, we are going to discuss some question answers related to this poem. So, the first question is where was the man going? इसका मीनिंग है कि जो मैन जो है इस पोएम में वो कहाँ जा रहा था. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज. मीन्स मैन जो है वो डाउन विलेज में नीचे जा रहा था. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वॉज हॉर्स गोइंग टू विलेज. कि हॉर्स घोड़ा जो है वो गांव में क्यों जा रहा था, क्या कारण था उसके जाने का. So the horse was going to village to get some hay. So जो हॉर्स है घोड़ा है वो विलेज में जा रहा था अपने लिए कुछ चारा कुछ भूसा लाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज गोइंग अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. कि कौन है इस पोएम में जो हिल्स के ऊपर जा रहा था रोल एंड प्ले करने के लिए, खेलने के लिए जा रहा था. कौन जा रहा था. सो द आंसर इज puppy. So puppy was going up in the hills to roll and play.
सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस पोइम से रिलेटेड थे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है, एंड दैट क्वेश्चन इज राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर पेट। आपको जो है अपने पेट के बारे में, कोई भी आपका पेट जो आप घर पर रखते हैं, मे बी इट कैन बी ए कैट और डॉग और समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे वो एक डॉग हो, चाहे पेट हो, चाहे पैरेट हो, है ना, उसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, थैंक यू।